भारत और कनाडा के बीच का तनाव अब डिप्लोमेटिक स्तर तक पहुंच गया है। दोनों देशों ने एक दूसरे के कुछ डिप्लोमेट्स को देश छोड़ने के लिए कह दिया है। इस बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मीडिया के सामने आकर बात की, भारत पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस यानी RCMP की एक जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए कुछ गंभीर आरोप लगाए। ट्रूडो की कही कुछ खास बातें आपको बताते हैं। As the RCMP commissioner stated earlier, they have clear and compelling evidence that agents of the government of India have engaged in and continue to engage in activities that pose a significant threat to public safety. This includes clandestine information gathering techniques, coercive behavior targeting South Asian Canadians, and involvement in over a dozen threatening and violent acts, including murder. This is unacceptable. While attempts have been made by the RCMP and national security officials to work with the Government of India and Indian law enforcement counterparts on this matter, they have been repeatedly refused. This is why, this weekend, Canadian officials took an extraordinary step. They met with Indian officials to share RCMP evidence which concluded 6 agents of the Government of India are persons of interest in criminal activities. And despite repeated requests to the Government of India, it has decided not to cooperate. ट्रूडो जब प्रेस के सामने अपनी बात रख रहे थे, इस दौरान उन्होंने पिछले साल यानी 2023 में हुई घटनाओं का भी जिक्र किया। यह तक कहा कि भारत को कनाडा की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करना चाहिए। I know the events of the past year and today's revelations have shaken many Canadians, particularly those in the Indo-Canadian and Sikh community. Many of you are angry, upset, frightened. I get that. This shouldn't happen. Canada and India have a long and storied history rooted in people-to-people ties, business and trade. But we cannot abide by what we're seeing right now. Canada fully respects the sovereignty and territorial integrity of India, and we expect the Indian government to do the same for Canada. As Prime Minister, it is my responsibility to provide reassurance to those who are feeling their safety has been compromised, but most importantly, it is my responsibility to take action and to never hesitate in doing what is necessary to protect Canadians. That is precisely what we are doing today. जस्टिन ट्रूडो ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब उनकी मुलाकात हुई थी तो दोनों के बीच क्या बात हुई थी। When I spoke with Prime Minister Modi at the end of last week, I highlighted how incredibly important the meeting between our national security advisors in Singapore this weekend was going to be. He told me that he was aware of that meeting. I impressed upon him that it needed to be taken very, very seriously. इसके अलावा जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर भारत पर ये बेबुनियाद आरोप लगाए हैं कि कनाडा में हाल के समय में जिन लोगों की हत्या हुई या हत्या का प्रयास हुआ, उसके पीछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर भारत सरकार का या भारत के कुछ एजेंट्स का समर्थन था। It is obvious that the Government of India made a fundamental error in thinking that they could engage in supporting criminal activity against Canadians here on Canadian soil, whether it be murders or extortion or other violent acts. It is absolutely unacceptable for any country, any democracy that upholds the rule of law. That is why we have taken such significant measures, why the RCMP chose to come out today and disrupt the pattern of Indian diplomats collecting through questionable and illegal means information on Canadian citizens that were then fed to criminal organizations that would then take violent actions from extortion to murder against Canadians. No country,
particularly not a democracy that upholds the rule of law, can accept this fundamental violation of its sovereignty. Canada fully accepts and respects the sovereignty and the territorial integrity of India. We expect India to do the same. In this case, they did not. कहा तो ये भी जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने इशारों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में भी कुछ ऐसी बात कही है जिसके तार वो चाहते हैं, ऐसा उनका आरोप है कि भारत से जुड़ रहे हैं या भारत के कुछ जो सरकार से लोग हैं, जो भारत समर्थित लोग हैं, उन तक वो तार जुड़ रहे हैं, ऐसा जस्टिन ट्रूडो का आरोप है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि आरसीएमपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात पर जोर दिया था। But what we've seen is from an RCMP perspective is the use of organized crime elements, and I will say and it's been publicly attributed and claimed by one organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. So that's what we're seeing here in Canada. And we believe that that group is connected to agents of the government of India. आप जानते ही हैं कि भारत ने 15 अक्टूबर को कनाडा के राजनयिकों को वापस जाने के आदेश दिए हैं। उन्हें शनिवार यानी 19 अक्टूबर की रात 12 बजे तक का समय दिया गया है। भारत के इस फैसले को आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के हत्याकांड की जांच से जोड़कर देखा जा रहा है, जांच जो इस समय कनाडा में चल रही है और जिसके संदर्भ लेकर कनाडा ने भारत पर कुछ बेबुनियाद लेकिन गंभीर आरोप लगाए हैं। ये खबर लिखी है आर्यन ने, कैमरे के पीछे है मयंक। देखते रहिए लल्लन टॉप।